आपने कवर को बाय करना है वो नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइस, तब तक के लिए मुझे इस वीडियो में मैं आपको अमूलेट टेस्टनेट पर कवर बाई करना सिखाऊंगा। सी यू इन नेक्स्ट। तो कवर बाई करने के लिए आपने जाना है testnet.amulet.org। Hello. Okay, so in link this पर video, आपने I'm जाना going to है। be focusing on how you can actually inject content onto a ये page लिंक मैं आपको using a डिस्क्रिप्शन Chrome में दे दूंगा extension. ताकि आप Now we're आसानी going से to look at a number of इधर ways आ you can सकें। do this. The first is using a यहाँ आने content के बाद script, which is basically आपने part of your क्लिक करना है manifest file कवर that you पे। set up that says if you're on this तो page, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है inject बाई this कवर। यहाँ पे JavaScript जितने भी file or कवर्स this आपको CSS file. अवेलेबल होंगे वो There's शो also हो another जाएंगे। technique you तो can जो आपने use, बाई which करना comes है from your उस background पर क्लिक page करें। or service worker if तो you're using फॉर Manifest एग्जांपल version मैं 3. यहाँ से Now what this will basically do is in ये your वाला बाई background करता हूँ, page, ये it listens और का when the तो URL changes and इसका then ये can जो यहाँ पे आपको inject नजर आ a रहा script है directly 5.7 from the की background जिसकी page कैपेसिटी है, without you having to have इसे आप this इधर से in बाई your कर सकते manifest हैं। file. ऐसे क्लिक करें। So we're going to go through क्लिक all of these करने के बाद examples and then I'll also explain how you can use the shadow USD route का आपने to avoid कवर बाई करना है CSS conflicts वो इधर between क्लिक your करें। मैं यहाँ पर injected element सिंपली and the actual elements in CSS that's already on the तो page. और इसे लिखने Just के before I बाद get यहाँ पे started, कंफर्म पे at क्लिक the end of कर this देता video, I'm going to let you know about my new हूँ। Chrome ड्यूरेशन Extension आप यहाँ पे Academy, सेट which कर I'm सकते currently हैं कितने working दिनों on. के लिए So if आपने this sounds कवर को बाई interesting to करना you, है। take a look at the end of the video and you can find out more information. Okay, so Then the first example transaction we're को going approve to करें। use is for Manifest version 2 and using a content script. So here's the manifest file here. I've kept it really simple, so I've only included the actual parts that we need for this example we're showing थोड़ा सा here. टाइम लेगा, So again, we have उसके our बाद name, we एक have our description, ट्रांजेक्शन we have our version, but the main thing we're कंप्लीट हो looking at जाएगा here is our और आप content script. सक्सेसफुली एक So what कवर this will बाई do कर is लेंगे। on any URL, USD if you वर्ड have that permission, I've got a ये separate video on onboarding and ट्रांजेक्शन permissions, अप्रूव हो गया which I'll करने link के to in the बाद आपको description. यहाँ पे शो हो But जाएगा जो assuming that you do कवर have आपने permission बाई to किया है actually access वो this यहाँ URL, आपके it's going to inject this माई script कवर्स just में here when the page is शो हो loaded. जाएंगे। So then if we तो open our चाहे तो आप content इसे बाद script, में you can क्लेम see कर that all we सकते हैं। have ये जो यहाँ पे ऑप्शन is आ रहा है a क्लेम function का, here called इधर init, क्लिक करके आप and all we're doing इसे is running क्लेम it भी straight कर down सकते here. हैं। But what this ठीक है, function does is it creates an element तो here, we give it a class वीडियो name, we में give it some inner इतना ही। HTML, and then we just append it onto the page. नेक्स्ट So वीडियो I'll show you तक straight away how इजाज़त this दीजिए। works. So here is तब तक the के लिए examples I'm going to कीप show. So we've got the